So good morning, students. As I already mentioned, that we'll start our session at 9:05 sharp. I would like to request you, all of you, just those who have not joined, please inform them, because in today's session we are going to learn how we can create our own mobile applications. So today's topic is Android app development, and in today's session we are going to understand how a student or how a teacher can create their own Android or iPhone applications on their smartphone. So I would like to request you, please be ready with a paper and a pen so that the instructions that I am going to share with you. Okay, so just give me a second, students. So we'll wait for a couple of minutes, and I would like to request you, please download MIT app companion. I'm going to show my screen. I'm going to share my screen with you. This is the application MIT. I hope my screen is now visible to all of you. This one. So you have to download this application. I'm going to share the link in the chat box also. If you're watching on the YouTube, please search MIT AI2 companion app on Google Play. So if you are an Android user, you can search on their Play Store. अगर आप एक Android user हैं, आप एक Android mobile phone होल्ड करते हैं, यूज करते हैं, तो आप अपने एप्लीकेशन में जाएंगे प्ले स्टोर में और just search MIT AI2 companion. So when you click on this application, I'm showing you how it looks like, but you have to search on Play Store. मैं भी आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे दिखता है, मगर आपको ये अपने मोबाइल फोन प्ले स्टोर पे सर्च करना है और इस
एप्लीकेशन की हेल्प से आप और बहुत सारी एप्लीकेशन बना सकते हैं. सो विद द यूज ऑफ दिस एप्लीकेशन यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन. Okay, so I hope this session is definitely going to help you to create a lot of applications, and by using this application also आप अपना ETL marathon में participate भी कर सकते हैं. Just like we have many options, we have Planet Code. There is a website जहाँ से आप games बनाना सीख सकते हैं. We have 3D software जो हमने कल किया था, आप उससे भी मैराथन में participate कर सकते हैं. And there is one more application MIT जहाँ पे आप applications बना के भी अपना ideas share कर सकते हैं. All right. So this one is the icon that you will see on your Play Store, and I would like to request just download this application on your device so that we'll understand how to create our own smart applications. Now, yes. So we'll wait for few minutes more, then we'll begin our session. So I would like to request just download this application. So I hope all of you have installed this application on your smartphone. If yes, that's great. If no, then what you will do after the session, you will try to install this application at your home. अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छी बात है. अगर नहीं किया, आप स्कूल में अपने मोबाइल फोन कैरी नहीं करते, तो आप सेम प्रोसेस अपने घर पे आज ट्राई कर सकते हैं. ओके, सो ये जो एप्लीकेशन है इसका मैं लिंक मैं आप प्ले स्टोर का मिल जाएगा आपको, और मैं यहाँ से आपको कॉपी भी कर देता हूँ, मैं आपको शेयर कर देता हूँ इन द चैट बॉक्स सो दैट यू विल चेक दिस एप्लीकेशन ऑन द प्ले स्टोर एट योर होम. ऑलराइट, सो जस्ट आपको क्या सर्च करना है, यू हैव टू सर्च MIT ऐप इन्वेंटर. सो दिस इज द फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन दैट यू हैव टू इंस्टॉल. सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन. एज ऑफ नाउ द टाइम इज 9:06 AM, and I hope you all are ready. And if you think that you need time or you need any help, just write your just write or use chat box so that I'll help you over there. Okay, so here now, yes, so we'll start with a new topic, a fresh topic, that is mobile application. So, okay, thank you for marking your attendance in the chat box. Okay, now students, what you have to do exactly? So first we'll understand what is Android app development. Android app development hota kya hai? Android app development is basically to create Android applications that you are using on your smartphone or you are using on your mobile phones. You are using various applications like WhatsApp. Then we have a lot of application, not only WhatsApp, we have a lot of application like we have a calculator, gallery, we have some kind of assistants. Then we have a application like Zoom in your installed on your mobile phone. Then you have Google Meet that is installed on your mobile phone. You have an application of music. आपके मोबाइल फोन में बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे आपने देखा होगा म्यूजिक है, जूम एप्लीकेशन जो अभी डाउनलोडेड है, देन कैलेंडर, व्हाट्सएप है ना, गैलरी. तो ये क्या बहुत काइंड ऑफ अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस होती है जो हमारे मोबाइल फोन में हमें हेल्प करती है डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए. आप एक मोबाइल फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे पेडोमीटर, जिससे आप जब वॉकिंग करते हैं आप अपना आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितना वॉक किया है पूरे दिन भर में. All right, the same as students, if you have a pedometer, if you have a application called pedometer, you can check that how much steps you have covered during a day.
Okay, so this is also application. So in the same way, there are n number of applications based on their uses. Like आप जिस तरह से यूज करना चाहते हैं आप उस तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं. All right. Now, so what do you understand by mobile app? आप क्या समझते हैं मोबाइल ऐप से? आप students, what do you understand by mobile app? You can write, even you can write in the chat box also. So what's your opinion? What do you understand by basically a mobile? What is a mobile app basically? मोबाइल ऐप होता क्या है, आप उसके बारे में क्या समझते हैं? आप इसे अपना चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं. चाहे आप यूट्यूब पे अगर आप लाइव देख रहे हैं मुझे, तो आप मुझे यूट्यूब पे भी अपना कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. So they are you can see the picture. They are the two brothers, Shravan. Basically, they are from India. Shravan Kumar and his younger brother Sanjay Kumaran. So at the age of 11 and at the age of his 10, they developed their own mobile application. श्रवण कुमार और संजय कुमार दो ब्रदर हैं जिन्होंने 11 एज और 10 एज में ही एक अपनी खुद की एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई. और जब वो 15 और 14 एज के हुए, जब उनकी एज 14 और 15 हुई, दोनों ब्रदर्स ने अपने खुद का एक कंपनी स्टार्ट किया जिसका नाम था गो डायमेंशन. So they have started their own company with the name of Go Dimension. So right now they have developed many applications based on iOS and Play Stores, right? And these applications are based on gaming, virtual reality and Internet of Things. So इन्होंने अभी अपनी इस 14-15 की एज में इन्होंने अपने खुद का स्टार्ट किया है एक फॉर्म जिसका नाम है Go Dimension. और इन्होंने अपनी बहुत सारी एप्लीकेशंस बनाई हैं, जैसे जो कि गेम्स के ऊपर, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर करती हैं, लाई करती हैं. सो अगर ये 10-11 एज के स्टूडेंट्स या 14-15 एज में जाके अपना खुद का स्टार्टअप करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते, राइट? सो माय मेन ऑब्जेक्टिव टू शो यू जस्ट टू कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे अर्ली एज स्टूडेंट्स हैं, those who are in grade of 5 or 6 7, they have already started working on app development. So in the same way, अगर आप भी ट्राई करना चाहते हैं, आप भी ऐसी एप्लीकेशंस बना सकते हैं. Okay, so in here I'm going to discuss more about Android app development software. So in today's session we are going to understand how we can create our own MIT App Inventor, MIT app applications. So first of all, I'm going to describe. मैं आपको कुछ MIT के बारे में बताने वाला हूँ. I'm going to show. I'm just going to explain you some little bit about MIT App Inventor. Basically, it's a web-based virtual programming. Web-based virtual programming means you can use this software on your Google browser. आप इस सॉफ्टवेयर को अपने Google browser पे यूज कर सकते हैं. आप अपनी एप्लीकेशंस को गूगल ब्राउजर पे ही बना सकते हैं. कोई अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू डाउनलोड एनी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर. यू कैन यूज दिस MIT ऐप Inventor on the Google browser just like a Tinkercad software. I think in the previous sessions you have seen that we are designing some 3D applications. We are designing some Android the Arduino's circuits on the Tinkercad software, that is an online software. So the same way you can use this MIT App Inventor on the Google browser. Now students, this Google browser this MIT App Inventor is a freely user interface. मतलब इसे आप कोई भी यूज कर सकते हैं. it's a block based programming. जैसा ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग हम स्क्रैच सॉफ्टवेयर या फिर हम ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग किसी अदर code.org या आपने यूज किया होगा, या ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जहाँ पे हमको सिंटैक्स या हमें कुछ टाइप नहीं करना होता, हम जस्ट ब्लॉक्स की हेल्प से ही हम प्रोग्रामिंग करते हैं. तो सिमिलरली MIT ऐप इन्वेंटर में भी आप ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हो. If you think that you are a new user, you don't know anything about the coding, you don't know anything about any programming language, and you want to learn to create this mobile application, so you can do by using the block-based programming. So I'll tell you what is block-based programming. So आपको मैं बताऊंगा block based programming होता क्या है, कैसे हम इसको ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, और ड्रैग ड्रॉप करके हम कैसे ब्लॉक्स की हेल्प से अपना एप्लीकेशन बना सकते हैं. So ये इसका इंटरफेस है जिसके बारे में आपको मैं लाइव बताऊंगा कैसे हमें इसे करना है. देन यू कैन सी दीज आर सम इंटरफेस. ओके, सो इनके बारे में मैं आपको लाइव आपको मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन बना के दिखाऊंगा. ये इनके कुछ नेम्स हैं, ये कैसे काम करते हैं, ये सब यहाँ पे दिया हुआ है. सो I'll explain you live over there. So let's create our first app. So students, to create our first app, what you have to do? सबसे पहले अगर हमें अपनी खुद की एक एप्लीकेशन बनानी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले जाना है गूगल क्रोम पे. सो मैं आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करके आई एम गोइंग टू शो यू माय गूगल क्रोम, like how you can create your mobile phone on the Google Chrome. So this is my
कैन यू सी माई वेब ब्राउजर? दिस इज माई वेब ब्राउजर। अभी हमें वेब ब्राउजर पे जाना है। अगर आपके पास में एक वेब ब्राउजर आपके लैपटॉप में, आप वहां पे उसको यूज कर सकते हैं, या आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो आप अपने स्मार्टफोन पे भी अपना MIT का एप्लीकेशन बना सकते हैं। So students, if you think that you don't have any laptop at your home, you can create your own mobile application on your smart mobile phone. So just open your smart mobile phone, open and then search MIT App Inventor on your Google browser. आपको अपने मोबाइल फोन पे जाना है और सर्च करना है MIT App Inventor. तो ये एक प्रोसेस है। अगर आपके पास में मोबाइल लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल फोन पे भी ओपन कर सकते हैं। So this is how my first link MIT App Inventor looks like. I have to click on it. हमें यहाँ पे क्लिक करना है। जब सब आप क्लिक करेंगे ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है। तो दिस वन इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ MIT App Inventor. आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक इन द चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स में इसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ सो दैट आप इसको यूज कर सकते हैं। And so students, this is how my MIT App Inventor's official website looks like. Or in the same way, the Tinkercad we have used, even you can use MIT App Inventor over here. Now, what we have to do now here, just can you see here, create applications. Just a second, I think my screen is not visible. I'm going to share it again. Yes, so click on the About App Inventor and you can see here, there are top 5 applications featured over here. हमारे पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 एप्लीकेशंस, जो हर कंट्री से सब अलग अलग लोग अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं, यहाँ पे वो टॉप 5 एप्लीकेशन है, जहाँ पे हमारे इंडिया के एक स्टूडेंट है जो शी इज फ्रॉम चेन्नई, ये चेन्नई से है, इनका भी एप्लीकेशन यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है. सो दिस आर द टॉप 5 एप्लीकेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, वेयर यू कैन सी देयर इज अ गर्ल फ्रॉम चेन्नई, शी हैव क्रिएटेड एन एप्लीकेशन ऑन रिलीफ एफर्ट्स. सो दैट्स एप्लीकेशन इज आल्सो फीचर्ड ओवर हियर. Okay, so this is the best part. Among the whole countries, one of our country's student is over here. Now let's create our first application. So first, this is the create application. Click on this, or you can do one thing. If you are a new user, you can create your ID over here. Okay, so just give me a second. Now, how to create your app ID, how you can create your how you can create your account over here. You can use your Google account to just log in. आप अपना Google account से भी इसको log in कर सकते हैं. It's a simple what we say, it's a very simple process. Okay, so just give me a minute. Yes, so what you have to do, if you see here, I have logged in through my Google account. Okay, so what you can do, sign out and you can create your own new ID over here. So that's a very simple step. Okay, now after creating your account over here, then what you will do, just click on start new project. You have to click start new project over here. So when you click start new project, then what is the next step? You have to write the name of your application. Okay, so here what I'm doing, I'm just clicking start new project, and then I have to just write my name. So suppose my application name is leap underscore to underscore learn, LEARN. So that's my project name, leap to learn. And be sure, no need यहाँ पे आपको space नहीं डालना. Okay, just write underscore instead of space, because it doesn't take space in between the letters. Okay, so I have just click OK. So this is my program is ready with the leap to learn. So this is my application. Now what I have to do, I have to create that application that I want.
तो हमने क्या किया, हमने अभी तक अपना एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, हमें यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन बनानी है जिसमें हम एक सिंपल एप्लीकेशन आज बनाएंगे। ओके, तो सिंपल एप्लीकेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम समझेंगे इसके बारे में कि ये जो इंटरफेस है ये क्या है, ये कैसे वर्क करता है। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस एप्लीकेशन वर्क। ओके, सो मीनवाइल I'll take a pause of 2 minutes and I would just want to ask from you, do you feel any difficulty till now? क्या आपको अभी तक कुछ डिफिकल्टी लगी इसको करने में, ये समझने में? आपको इतना समझ में आया? I just need your response in the chat box. So please say yes or no. If you feels any difficulty, then I'll move forward. So I'll wait for 1 minute for your answer. So I can see here, I think. Okay, so I guess there is no doubt over here. All right, so let's move to our next process. So what we have to do here, students, can you see here? This is the interface part. This is the interface part. ये हमारा interface part है जहां से हम blocks use करते हैं अपनी application बनाने के लिए. So you can use blocks from over here. There are, you can see a lot of blocks. Button block, image block, label block, list picker, है ना, notifier, password text. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्लॉक्स मिलेंगे। बटन है, चेक बॉक्स है, डेट पिकर है ना, लिस्ट पिकर, पासवर्ड। अगर आपको कोई पासवर्ड वाला एप्लीकेशन बनाना है, आप यहाँ से पासवर्ड ब्लॉक्स यूज कर सकते हैं। आपको कोई स्विच बताना है, आपको कोई टॉर्च वाला एप्लीकेशन बनाना है जहाँ पे आपको टॉर्च में स्विच लगाना है, तो आप यहाँ से स्विच को भी यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू मेक अ एप्लीकेशन दैट इज हैविंग अ फ्लैश लाइट and you want to make it on and off, so you can use the button that is switch. Okay, then there are a lot of buttons over here: text box, time picker, web viewer. So यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन है। Not only this, it's not only this, you can see there are many and number of options are there, like layout, media, drawing and animation, maps, sensors, social, storage. So यहाँ पे बहुत सारे options हैं जिसमें आप बहुत सारी applications बना सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, layout है, media है, ड्राइंग एंड एनिमेशन। अगर आप कोई ड्राइंग बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई गूगल मैप जैसे चीज बनाना चाहते हैं, गूगल मैप का ऑप्शन यहाँ पे है। क्लिक ऑन इट एंड यू कैन सी एन नंबर ऑफ देयर आर ऑप्शंस फॉर मेकिंग मोबाइल गूगल मैप्स। जैसे गूगल मैप जैसे वर्क करता है, वैसे बहुत सारा एप्लीकेशन आप यहाँ से बना सकते हैं। नाउ अगर आपको कोई सेंसर से रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाना है, एज मैम ऑलरेडी शेयर्ड ना, कि यू हैव टू फाइंड आउट सम सेंसर्स दैट आर अवेलेबल ऑन योर मोबाइल फोन। सो यू हैव, कैन यू इमेजिन दैट वी हैव दीज नंबर ऑफ सेंसर्स? क्या आप सोच सकते हैं हमारे मोबाइल फोन में इतने सारे सेंसर्स होते हैं? जैसे एक्सक्लेरोमीटर, बारकोड सेंसर, बारकोड स्कैनर, बैरोमीटर, क्लॉक, गायरोस्कोप सेंसर, hygrometer, light sensor, है ना? Then we have location. So these are the n number. These are the sensors that are available on our smartphone. ये सारे sensors हमारे मोबाइल फोन में available हैं और इनको भी आप यूज कर सकते हैं। For example, pedometer. As I already mentioned, when you start walking, this pedometer application helps you to count your steps. जब आप चलना शुरू करते हैं तो pedometer आपके walking steps को count करता है। So the same way, we have a proximity sensor. Proximity sensor means that ना, जब कभी फोन आता है, you have seen that कि lights goes off when the phones come, when you pick the phone. तो जब फोन उठाते हैं हमारा लाइट बंद हो जाता है because of proximity sensor. So there are a lot of sensors are available on the this application. Now if I talks about social media, you can see here we have sharing block, we have texting block, phone call block. तो अगर आप कुछ सोशल मीडिया जैसे यूज करना चाहते हैं, हमारे पास कॉन्टैक्ट, ईमेल आईडी, फोन नंबर, ये सारे एप्लीकेशन यहाँ पे हैं। आप अगर कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं ब्लूटूथ या ऐसा, तो यहाँ पे ऑप्शन है ब्लूटूथ, वेब. So if you want to use connectivity, if you want to make an application that use connectivity, you can use Bluetooth client, you know. So these are n number of blocks available over here. So now let's start with a simple application.
I want to make a application of a traffic light. I want to ना suppose मेरे पास एक student है, मैं उसको हमारा एक student है that who is in grade second, third or in the nursery KG. Okay, हमें उसको सिखाना है ट्रैफिक लाइट के बारे में. तो हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिससे हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स के बारे में समझें कि कैसे रेड सिग्नल क्या होता है, येलो क्या होता है, ग्रीन क्या होता है. So student, in today's session we are going to learn how we can create a application that educational application that helps toddler kids to understand what is red light, how what is the difference between red light, green light and yellow light and the traffic signals. So to make this application, what we will do first, we will use three buttons. Three buttons means a buttons for red, a button for green and button for yellow. So first, can you see here user interface? User interface, you have to click over here. आपको यहाँ user interface में click करना है और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बटन. तो आपको करना क्या है, इस बटन को हमारे इस मोबाइल फोन पे लगाना है. हमें इसको यहाँ से पिक करना है, क्लिक करना है, ड्रैग करना है और ड्रॉप करना है. जस्ट हैव टू क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप. उठाना है, इसको यहाँ पे रखना है लाइक दिस. So you just have to click, drag and drop over there. So this is my button one. Okay. Now, if I want to change the name of this button, I want to change the name of this button. What I will do, मुझे इसका अगर नाम change करना है, मैं क्या करूँगा? Here in the components, you can see this is the button one. So components means if you have used n number of buttons or n number of these blocks, so it will show you over here. आप यहाँ पे जितना भी चीजें यूज करेंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा. Okay, let's suppose if I delete this one, if I delete this one, delete, so nothing is there and you can see nothing is there, it's only my screen is available. So आप जब इसको डिलीट कर देंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बस आपको स्क्रीन दिखाई देगा. तो ये कंपोनेंट बताता है कि आपने क्या क्या यूज किया. This component shows what are the options you have used inside your mobile phone. Okay, so if I drag and drop this block button, if I drop this button over here, you can see button one is visible now. So that means in the component I have used button one. Okay, but suppose if I use another button two like this, so it will show that you have used button two also. So this is how it goes. All right. Okay, I just want to know, is now my screen and my audio is visible? Is it fine to all of you? Now there's a synchronized audio and video. I hope, just give me a second. I'll check it exactly what happens. Sir, now is my, yes, that's great. I think my voice is audible. Okay, so I'm here right now. What I as already mentioned, मैंने अभी तक क्या mention किया है, हमने यहाँ पे दो buttons लिए हैं, button one and button two. Again, I'm going to use button three. मैं फिर से एक button use करने वाला हूँ, button three. यहाँ पे मैंने तीन बटन, आप देखिए, बटन वन, बटन टू और बटन थ्री, तीनों बटन हमने यहाँ पे यूज कर लिए. नाउ आई एम गोइंग टू चेंज द नेम. अब मैं इसका नेम चेंज करने वाला हूँ. तो सबसे पहले मैं बटन वन का नाम चेंज करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ द बटन वन. सो हाउ आई एम गोइंग टू चेंज, आई एम गोइंग टू go, I'll use this property option. Can you see this properties? In the properties you can change the feature, you can change the size, the color, anything in here. So for that what you have to do, आप इस प्रॉपर्टी में जाके कलर, साइज, उसका फॉन्ट, सब कुछ चेंज कर सकते हैं. हर एक बटन का आप उसको अपने हिसाब से दिखाना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट स्टूडेंट्स, click on the button one, go here, and if you want to make the size, font size bigger, instead of 14 just do 20. So when I click 20, can you see the difference? Can you see the difference? आपको डिफरेंस दिख रहा है इसमें? मैंने क्या किया, मैंने इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया और अब इसका साइज देखो कितना हो गया है. टेक्स्ट फॉर बटन वन बड़ा हो गया जस्ट बिकॉज मैंने प्रॉपर्टीज में इसका साइज बड़ा कर दिया था. सो ये आप कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कैन डू दैट, सेलेक्ट दिस वन एंड चेंज द फॉन्ट साइज. इवन you want to make it bold, just do one thing, click on the bold and here you can see. Okay, now here italic, so it depends on you. Now I want
टू चेंज द टेक्स्ट, मैं इसका टेक्स्ट भी चेंज करना चाहता हूँ, तो हाउ वी कैन डू चेंज द टेक्स्ट, हम टेक्स्ट कैसे चेंज कर सकते हैं? सिलेक्ट दिस वन एंड राइट RED रेड, बिकॉज दिस इज माय बटन रेड. कैन यू सी हियर द बटन इज नाउ रेड. इन द सेम वे आई वांट टू चेंज बटन 2, मैं इसको भी चेंज करना चाहता हूँ. इसके लिए what I'll do to change this one, click here, make it 20, make it bold, and you can see bold. Now we'll change the name, हम इसका नाम भी चेंज करेंगे. So after red what comes? Yellow, YELLO, yellow, YELLO. The spelling is right, I think so. If no, let me correct. I think I'm forgetting the spelling of yellow because it's, I'll check. Yes, so ELLO, pardon me for this. So now the third one is green. So for the green, let's change the text GREEN green. And what we will do here, change the size also. 14 को हम कर देंगे 20. तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं इसका कुछ थोड़ा सा हम चेंजेस कर रहे हैं जिससे मेरा एप्लीकेशन मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे. So can you see here, students? I have changed all the things here. Now what we will do, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव अच्छा बनाएंगे. तो अच्छा बनाने के लिए अब हमें क्या करना है, इसका थोड़ा सा ना साइज इसका हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन जो ये बटन है ना ये सेंटर में आए, सेंटर में आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, स्क्रीन. कैन यू सी हियर द स्क्रीन पार्ट? with the help of screen part you can manage all these blocks in between the center. So just click on the screen and click it center. Okay, because this property is for the screen, this property is for the screen because I have selected screen. So now click on here and click over center. So now this makes my buttons in the center. So I have what I did over here, I just select screen, मैंने select screen को select किया और screen में select करने के बाद मैंने इसको choose किया कि सब कुछ center में आना चाहिए, horizontal भी और vertical भी, तो इससे ये center में आ गया. Okay, now if you want to make the size, अगर इसका size आप बराबर करना चाहते हैं, if you want to make the size equally of all these blocks, click on the button one here, and then what you will do, go here in the height size, and if you want you can use pixel also. Pixel suppose 50, pixel 50, sorry 50, but it's a height I guess 50, and width also. Now width, now I'm going to change the width also to 50, but I'll make it a little bit bigger because 50 is I think not enough. 80, 100. Fine. So the same way we'll do for yellow button. We'll select yellow button. We will change the height to 50 and width to 100. I think that is fine. Now for the green, we'll select height to 50 and width to 100. So this is how I am just changing. और इसको थोड़ा सा और अच्छा better बनाने के लिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं. Okay, now I think it looks cool. All are now in equal size and shape. Now, what is the next step? This is done. This is called front end programming. Front end means जो हमें दिखता है, that we can see, that is called front end programming. Now we'll do back end programming. So there are two terms, front end and back end. So we have done the front end part. Front end part means the part that is visible to the user. Okay, in the showroom you have seen a lot of in the showroom of a mobile phone or a shop of grocery, you have seen that that the the things that are visible to you, that means in their showroom all the things looks good, right? But at their go down at their showroom all are messy. So the same way, this is my front part, this is my showroom. Now अब हम बात करेंगे for the back. Just a second. Yeah, so this is my front part and now we'll discuss about back end part. Back end part means programming वाला part. So students, ये हमारा front part हो चुका है ready. हमारा जो user को दिखाई देगा, जो आप use करेंगे ना मोबाइल फोन, उनको ऐसा दिखाई देगा, red, yellow और green button. Now अब हम करेंगे programming वाला part. So to do the programming करने के लिए हमें क्या करना है, just we'll go over here
blocks. This is the designer part that we have done. Now for the programming, we'll click on the block part. Designer part हम कर चुके हैं. अब block part करने के लिए हम click करेंगे blocks button पे. So I'll click on the blocks. So now this is how it looks like. So it again, I'll show you it again. So this is the designer part, and this is blocks part. Now let's do the now. Just give me a minute. Yes. So students, as you have noticed that we have, can you see here this one? This is my screen. This is my screen option, button 1, button 2, and button 3. Okay. And the rest of the other things. These are the components that helps me to do the programming. यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो तीन चीजें यहाँ पे आप देख रहे हैं, बटन 1, बटन 2 और बटन 3, जो मैंने यूज किए थे अपने डिजाइनिंग पार्ट के लिए, और ये मेरा स्क्रीन है. बाकी की चीज हमें हेल्प करेगी प्रोग्राम बनाने में, प्रोग्रामिंग करने में. प्रोग्रामिंग मतलब ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग. ओके. Now one more thing here. Just give me a second. Yes. So first of all, what I use here, हमें प्रोग्रामिंग क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि what we have to do कि whenever the user clicks the red button or yellow button or green button, it shows the color of red, yellow और green. जब भी यूजर, एक छोटा बच्चा रेड बटन, येलो बटन, ग्रीन बटन को प्रेस करेगा तो वो उसको रेड कलर में, येलो कलर में और ग्रीन कलर में उसको वो कलर दिखाई देगा. ये हमें करना है. Okay, so our target, our today's target is that when the user click the red, yellow, green button, it shows the color of a red, yellow, green accordingly. So to do that, what we will do, we'll click the block button, and here you can see block button 1, button 2, button 3. So I'm going to take all these buttons over here. So click on button 1, and click on button 1, and you can see there are a lot of options. So I'll select this one. When button 1 is clicked, I'll just click, drag and drop over here. So it shows when button 1 is clicked. Then when button 1 is clicked means when the user clicks the button 1, red button, then what happens? User बटन 1 पे क्लिक करेगा तो क्या होना चाहिए वो हमें यहाँ करना है. यूज क्या है कि जब यूजर बटन 1 क्लिक करेगा तो व्हाट विल हैपन, अगेन विल गो इन द ओवर हियर and will there is another option. यहाँ पे एक और ऑप्शन है. I'll show you this one. Can you see this one? Set button 1 text color means, set means change the button 1's, not the text color, change the button 1's background color. Change button 1 background color मतलब बटन 1 का जो बैकग्राउंड का कलर है वो चेंज हो जाए. तो मैं इसको उठा के यहाँ रख दूंगा ऐसा. I'll just drag and drop over here. Okay. So this block signifies कि when I press the button 1, it changes the button 1's background color. So which color you want? So I'll go here. I'll choose colors. Can you see here color option? I'll choose color and I'll use this one, red. I'll just put it over here like this. So this program says when the user clicks the button 1, then button 1's background changes into the color of a red. ये program जब आप यूजर बटन को प्रेस करेगा background will change. Okay. For the rest two buttons, what we will do, we'll duplicate these blocks. So here I'll do button 1 to button 2. Can you see here button 1, when user click the button 2, जब user button 2 पे क्लिक करेगा तो उसका बैकग्राउंड भी चेंज होना चाहिए. So किसका बैकग्राउंड चेंज होना चाहिए, button 2 का. So I'll select button 2. So can you see the difference between these two blocks? This is for button 1, this is for button 2. When the user clicks button 2, button 2's background changes into which color? Yellow. I'll select yellow. Okay. Similarly, we have to do it for the third option. यही सेम हमें थर्ड के लिए करना है. Make a duplicate of it. Duplicate करेंगे, सब कुछ चेंज कर देंगे. We'll change all the things like button 3 and the background color to green. Oh, green. So this is how my program is ready. Okay, my program is ready. Button 1, button 2, and button 3.
So again, I'm going to explain you it. If you have any doubt, you can use chat box, comment box. I'm going to explain it again. So when the user clicks the button 1, then what will happen? The button 1's background color will set to which color? Red color. Okay. Similarly, when the user clicks the button 2, what will happen? The button's 2 background will change into yellow color. And the third is when the user clicks button 3, then the background of the button 3 will changes into green. All right. So this is how my program is done. Now I want one more thing. I want जब what will happen students, हमने क्या किया अभी, हमने यहाँ पे बटन 1, बटन 2 और बटन 3 का ऑप्शन यूज किया है कि जब यूजर बटन 1 प्रेस करेगा तो उसका बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, जब वो बटन 2 प्रेस करेगा उसका बैकग्राउंड येलो हो जाएगा, और जब वो बटन 3 प्रेस करेगा तो उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। तो ये हमने अभी तक किया है इसको। नाउ एक चीज और नोटिस करना कि जब सारे कलर्स हमारे रेड येलो ग्रीन हो जाएगा तो उसके बाद उसको कलर को रीसेट करने के लिए भी हमें एक बटन चाहिए जो इन सबको रीसेट करे, है ना, ताकि इसको अगेन टेस्ट कर सकता है। So what we will do, students, we will add one more button over here just to reset all the colors. Na, just to reset all the colors. So what I'll do here, I'll just change the color from here, RESET. I just used one more block with the name of reset. Okay, with the one of the name of reset. So when the user click the reset button, all the color will get change. मतलब उनका original color हो जाए. Its original color will appear. So here what we'll do again, go in the designer part, sorry, in the block part, and we'll select one more option, that is duplicate for button 4. For button 4. I'll duplicate for button 4. When the user clicks the button 4, means the reset button, the button 4's background, not the button 4's background. Here what we'll do, button 1 background. I will remove this one. Oh, sorry. What I am going to do, I'm just going to make a copy of it. Duplicate. I'll tell you why I did this one. So button 1, button 2, and button 3. So here, when the user clicks the button 4, on the same time, the color of button 1, button 2, and button 3 will change into white color. जब हम बटन 4 को क्लिक करेंगे तो बटन 1 का कलर व्हाइट हो जाएगा, बटन 2 का भी व्हाइट हो जाएगा और बटन 3 का भी व्हाइट हो जाएगा. So this is now my program is done. I hope till now you have understand कि हमने प्रोग्राम कैसे किया है, how we did the programming part. Now let's do a trial. अब हम एक ट्रायल करेंगे कि ये काम ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा. Okay, so to check is it working or no, what we will do, we'll go here and can you see students here we have, है ना. अब हम इसको चेक कहाँ करेंगे, how you can check is this application is working or no. So to check this application we have a method by which we can connect this web application to your mobile phone. आप इस application को अपने mobile phone से भी connect कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे, go over here, click on the connect, and you can see we have an option for AI companion, emulator and USB. So हम इसको अपने AI companion को, हम इस application को AI companion से connect करना चाहते हैं. I want to connect this web application with AI companion that you have in the starting. We have downloaded the AI companion app. This one we have downloaded this application in your smartphone. So now I want to connect this web browser, this software with my mobile phone with AI companion. So what I'll do, I'll click on AI companion, and you can see we have now it's showing me two things. A QR code and a 6-digit code. So ये बता रहा है कि आप इसको QR code से स्कैन कर सकते हैं या फिर 6 digit से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. You can connect this application with the QR code or with the 6-digit code. I think someone scanned my code. So what I'll do, I'll just make a hard reset to reset this connection. I'll reset this connection so that the one who have connected to my screen उसका वो reset हो जाएगा, है ना. It will reset. जिसने अगर कभी क्या होता है कि हमारा कोई
गलती से कोई दूसरा पर्सन कनेक्ट कर लेता है या नेट प्रॉब्लम आता है, तो हम रीसेट में जाके उसको रीसेट भी कर सकते हैं, जिससे हमारा पुराना नेटवर्क, पुराना जो एस्टेब्लिशमेंट है, कनेक्शन है, वो हो जाए। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ, आई एम गोइंग टू शेयर माय मोबाइल फोन स्क्रीन in which I have downloaded MIT app companion, and I'm going to show my screen, and then from that my screen I'm going to scan this QR code. Okay, so I'm going to scan this QR code. So I'm going to show my screen with you. Just give me a minute. Yes, so here now I hope you all can see my screen. Just give me a minute. Screen sharing. Yes, so my screen is visible. Here is my application, MIT AI Companion. I think someone is sharing their screen, I guess. Okay, just give me a second. I'll share my screen again. Just give me a second. I think I have lost due to some. Yes. So I'm going to share my screen again, screen sharing. So can you see my screen? This is my mobile MIT app companion. I'll click over there. And this is how my mobile phone applications looks like. Now student, we have two options to connect this application. ये मेरा एक mobile application है MIT AI2 companion, जो मैंने अपने mobile phone में download किया है. Now आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास दो options हैं. पहला है connect with code, second है scan with QR code. So we have two options. The first one is scan QR code, and the second is connect with code. So you can choose any one. So I'll select scan QR code. Scan QR code. Okay, this is now scan QR code option is now fine here. Now what I'll do, I'll just here you can see my screen and just make it small. Now I'm going over connect. मैं यहाँ connect पे जा रहा हूँ और यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन आएंगे. चाहे तो मैं इसको स्कैन भी कर सकता हूँ या फिर मैं इसको QR कोड से भी कनेक्ट कर सकता हूँ. So I'll click over here AI companion. AI companion देख रहे हैं, यहाँ से मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ. तो ये मैंने अपना एप्लीकेशन कर लिया स्कैन. ठीक है. So I have done the scanning part, and it will take a little bit 30 seconds hardly, and then you can see the interface on your smartphone. So can you see over here that application that I had designed? So here is the reset button, red button, yellow button, and green button. So if I want to teach students about the traffic signals, so what they will do, if they want to understand what is which no, what is the red color mean signifies, or no, so just click on the red button. So you can see the color goes red. Okay, and when you click on the yellow button, you can see the color goes yellow, and when you click green button, you can see the color goes green. So this is how it works. Now I see, can you see here red, yellow or green? But the thing is कि now the color is not going. जो हमारा अभी कलर है, मैंने जब रेड बटन, येलो बटन और ग्रीन बटन पे प्रेस किया तो आपने स्टूडेंट्स देखा कि रेड बटन, येलो बटन और ग्रीन बटन हमारा चेंज हो रहा है. मगर अब मुझे इस कलर को क्लियर करना है, तो कलर क्लियर करने के लिए हमने एक बटन यूज किया था जिसको हम बोलते हैं रीसेट बटन. तो रीसेट करने से आप देखो हमारा कलर चला गया. ओके, नाउ अगेन क्लिक करेंगे येलो बटन पे तो वो येलो बटन दिखाएगा. अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ रीसेट तो वो फिर से रिमूव हो गया. ग्रीन बटन रीसेट, रेड बटन रीसेट. ओके, तो दिस इज हाउ आप भी ऐसा कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं जहां पे हम रेड, येलो और ग्रीन को यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो ये एक एप्लीकेशन है. इसमें आपको होमवर्क क्या करना है मैं आपको बताता हूँ. व्हाट्स योर होमवर्क? नाउ द होमवर्क इज कि व्हेन यू क्लिक द red button, the color of the button changed, and side by side it shows me stop. ओके, जब आप इसको, आपको होमवर्क ये है कि जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कलर है वो उसका चेंज होना चाहिए, एंड साइड बाय साइड द कलर ऑफ द येलो, द नेम ऑफ द रेड बटन गेट्स चेंज इनटू स्टॉप. आप जब इस पे क्लिक करेंगे तो नाम भी चेंज होना चाहिए स्टॉप में. येलो पे करते ही रेडी और ग्रीन पे करते ही गो नेम आना चाहिए. ये आपका होमवर्क है. आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड दिस सेशन इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड ऑन द यूट्यूब्स लाइव. सो इफ यू थिंक दैट यू फाइंड्स एनी डिफिकल्टी, आपको कुछ स्टेप समझ नहीं आए हैं, तो आप फिर से उस रिकॉर्डिंग को चेक कर सकते हैं और वहां पे अपना स्टेप डाउट क्लियर कर सकते हैं. So moving ahead, I hope this one is clear to you. Now students, if you have any doubt, you can ask me over here. आप कुछ पूछना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, and I'm going to show my screen also. आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं.
मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ सो दैट आप यहाँ से पूरा कंप्लीट पार्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे का स्टेप करेंगे। ओके, so I'll wait for hardly 2 to 3 minutes, then I'll show you the that coding wala part, block part. I hope you all of have taken the screenshot. Now let's move to the blog part, this one. So please take the screenshot of this also. If done, then let me know so that I'll move to the next step. Because after this session there is one more interesting session that is based on circuiting and programming that is conducted by Tariq sir. इसके बाद एक सेशन होगा जिसमें आपको प्रॉपर आर्डिनो से रिलेटेड चीजें बताई जाएंगी और एक प्रैक्टिकल होगा। उसके बाद हम थर्ड सेशन में समझेंगे मशीन लर्निंग के बारे में। तो हमारे साथ जितेंद्र सर हैं जो आपको आज मशीन लर्निंग क्या होती है और कैसे आप मशीन लर्निंग पे आप अपने प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। सो वी हैव टू मोर experts with us, those who are going to explain you about circuiting and Arduino, and then the third expert is Mr. Jitendra, is going to explain you how you can create your own machine learning applications. So he will guide you and he will do some practical experiments, वो आपके साथ practical experiments करके दिखाएंगे on machine learning. And I hope you understand what is machine learning, how machine learning predicts or how machine learning detects the data. So students, till now, if you have any doubt, you can use your chat box or you can unmute yourself if you want to ask anything. Yes, any doubt? No? I think there is no doubt because no one is asking anything. Is it clear to all of you? So what I'll do, I'll check on the YouTube also because I guess a lot of participants are on YouTube. So yes, side. Uh, Sorry for that, but yes, students, that's your homework. I hope you all have just आपने सभी ने अपना homework लिख लिया होगा. You have all noted your homework. What you have to do कि when you click the red button, yellow button or green button, and then suddenly it changes the color into red, yellow, and green, and side by side it shows me the stop, ready, and go over here. ठीक है, आपको जैसे इस पर रेड येलो ग्रीन पर क्लिक करेंगे तो वहां पे वो शो करना चाहिए रेड येलो या ग्रीन कलर. So moving ahead, I think no doubt, but yes, I can check. Okay. So for more features, students, you can check. There are a lot of options. अगर आप यहाँ पे कैलकुलेटर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें कैलकुलेटर भी बना सकते हैं. यहाँ पे आप अपना खुद का कैलकुलेटर भी बना सकते हैं इस एप्लीकेशन पे. Just give me a second. So I can see here in the chat box also, I think we have some, a lot of students have joined, and yes. Good morning, Shila. All right. So yes, so students, what we will do, if you have no doubt, what I'll recommend, you can just go over MIT applications, and here you can see that we have a lot of options like about App Inventor. जस्ट सी एंड देयर आर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स एक्चुअली. यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी मिलेंगे अगर आप इसमें कुछ सीखना चाहते हैं. एजुकेशन में जाएंगे, यहाँ पे यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑन एमआईटी एप्लीकेशंस. लाइक इफ यू वांट टू क्रिएट योर ओन टॉक टू मी एप्लीकेशन जस्ट लाइक यू हैव सीन टॉकिंग कैट, टॉकिंग टॉम, टॉकिंग कैट, दैट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस यू कैन क्रिएट. आप टॉकिंग टॉम, टॉकिंग कैट जैसी एप्लीकेशन भी यहाँ पे बना सकते हैं. और बाउंसिंग बॉल, डिजिटल डूडल्स, तो ये सब दिया हुआ. इवन इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा लगता है तो आप एआई बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे बना सकते हैं. ऑलराइट, so this is how you can create projects on AI. So I'll show you. See, this is how AI project work.
Now, students, anything else from your end or teachers you want to ask anything, just you can turn on your mics, you can ask over here. Then we'll do our next activity, or what we'll do, we'll take a break of just 5 minutes, so that student will take a bio break, and then we'll begin our new topic, that is uh, Arduino circuit and programming. So here तारिक सर is with us, though that is going to conduct the another session. तारिक सर हमारे साथ में, जो एक फ्रेश नया सेशन लेने वाले हैं हमारे प्रोग्रामिंग सर्किटिंग के बारे में और आर्डिनो के बारे में, और प्रॉपर आपको एक कोडिंग करना कैसे होता है वो बताएंगे. सो अगर आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं, हम शार्प 10 पे हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट सेशन एट शार्प 10. So if you want to take a bio break, if you want to take a no, break, so just we have 7 minutes, I guess. Okay, and students, those who are interested to learn the mobile application, those who want to create more application based on machine learning image classification, those who want to make their own personal audio classifier application, voice calculator tutorial, you can see here this, that's an intermediate level. एक intermediate level है जहाँ पे आप voice calculator tutorials बना सकते हैं जो आपके voice पे calculate करेगा. Then we have therapist bot, we have awesome dancing with AI tutorial. So these are some kind of applications that you can create. Here one more application that I love, that is so rock paper and scissor. आप अपने मोबाइल फोन पे भी रॉक पेपर एंड सीजर गेम खेल सकते हैं. ओके, so this is just all because of prediction. यहाँ पे predict करता है हमारा machine learning, and the backend part is based on machine learning. So those students who are interested to learn machine learning, because it's an upcoming technology, so those who are interested in this, you can please follow this. And there are a lot of applications, not just like this one. Can you see here mole mash? I think have you have I think you have played this game before. You have to you have to hit the mole. आपने गेम पहले खेला होगा, आपको एक माउस को क्लिक करना होता है, जितने माउस आप क्लिक करते हैं उतने ज्यादा आपको नंबर्स मिलते जाते हैं. तो ये गेम भी आप यहाँ पे सीख सकते हैं. नॉट ओनली एप्लीकेशन, यहाँ पे आप गेम्स बनाना भी सीख सकते हैं. लाइक वी हैव NFC कप गेम फॉर AI2. Okay. Yes. So one more, students, I want to ask here, if you have checked this application, if you have created this application, now if you want to install this application, आप इसको install करना चाहते हैं, if you want to save a APK, okay, now how you can do that? Can you see here the build option? Build option, click on the build and save Android app.apk. By using this application, you can install this application on your mobile phone. इस बिल्ड ऐप पे जाके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपना खुद का एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसको किसी भी मोबाइल फोन पे आप प्ले कर सकते हैं. Okay, just click on this and you can play all these applications. You can just download this application, you can install it in any smartphone. Okay, share with your friends, like I have created this application on this mobile phone. अब अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए कि मैंने ये एप्लीकेशन बनाया है अपने मोबाइल फोन पे और आप भी इसको इंस्टॉल करो. तो आप जितनी भी एप्लीकेशन बनाओगे आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, जस्ट बाय क्लिक ऑन द बिल्ड एंड क्लिक ऑन द एंड्रॉइड एपीके. तो यहाँ से आपका एक एंड्रॉइड एपीके डाउनलोड हो जाएगा. एंड दोस स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू अपलोड देयर प्रोजेक्ट्स ऑन प्ले स्टोर, आई नो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को एक डाउट होगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर क्यूरियस कि सर हाउ वी कैन अपलोड आवर application on Play Store. So basically for the Play Store, there's if you want to upload your application on Play Store, you can, but you have to first purchase a license. आपको एक लाइसेंस लेना होगा. लाइसेंस मींस यू हैव टू पे समथिंग. पेमेंट करने के बाद ही हम प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशंस डाउनलोड अपलोड करते हैं. So if you are good in programming, आपने बहुत अच्छा एप्लीकेशन बनाया है that helps people, तो definitely you can upload it on Play Store. But what I recommend, if you are designing an application, आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसको आप मैराथन में सबमिट कीजिए. पॉसिबली हो सकता है आपका अगर प्रोजेक्ट सबमिट हो गया, आपका प्रोजेक्ट टॉप 300 में आ गया और वहां पे आपको एक अच्छा रिकग्निशन मिला, आपको एक अच्छी कंपनी से सपोर्ट मिला है आपके एप्लीकेशन के लिए, तब वहां पे आपकी हेल्प हो सकती है कि हम उसको प्ले स्टोर पे भी अपलोड करें और बाकी कम्युनिटी के साथ शेयर करें. So students, if you think that your application is awesome, it's just go and submit it in the ATL marathon, and if you will select in the top 300, then definitely some of the experts from different companies and IT companies, they will definitely going to help you to upload that project on the Play Store. Okay, so yes, so I can see
Sir, how we can, okay, that's, thank you so much. So I hope you understand this one. Now, students, there's a 3 minutes left, and we'll begin with our another session. I'll just give me a second. I'll check. And if you have any doubt, you can teachers. If any student have any doubt, you can please ask them, and you can write on the chat box behalf of them. So I'll answer you over there. Then we'll switch to our next session. So I hope, Tariq sir, are you with us? I think I have to check. Just give me a second. Yeah, good morning, Neeraj. Hi, good morning, sir. So I think we have done with the MIT application. Now I Okay. think students are also ready. I think they have taken their break. Students, क्या आप सभी अपने place पे आ गए हैं? So teachers, I would like to request you that we are going to start with another session on the Arduino programming and circuiting. So I hope you all have joined. If yes, so please I need a yes in the chat box so that we will begin with our नया session, new session. So students, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, टीचर्स और स्टूडेंट्स सभी ने अगर ज्वाइन कर लिया है हमारे एक और सेशन के लिए, सो आई नीड कि अगर आप यस कर देते हैं चैट बॉक्स में, सो दैट इट्स अ सिग्नल, ग्रीन सिग्नल फॉर अस आल्सो, ताकि हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करें, दैट इज बेस्ड ऑन आर्डिनो. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर वेटिंग फॉर द सेशन ऑन आर्डिनो एंड प्रोग्रामिंग. So I can see over YouTube also. If no, just we'll wait for 2 to 3 minutes, then we'll begin our next session. Yes, over to you, Tariq sir. I'm going to unshare my screen. I hope you are ready. Yeah, thank you, Neeraj. Neeraj, could you please make me a co-host so that I can share my screen? Yes. Thank you. Done. Okay. Hope my screen is visible, right? Yes, visible. Yeah. So I'm going to start. Yeah. Hi, good evening. Good morning, everyone. Good morning, student. Good morning, teachers. So yeah. So this is Tariq, and my session would be completely on Arduino microcontroller and the ways like how we can do coding on Arduino microcontroller. Correct. So meanwhile, I start. I just would like to know, Neeraj, like we have gone through these basics of Arduino. Yes, we have gone through the basic of Arduino, and one more thing actually I want, because we have schools from south and north, so we'll try कि इसको bilanguage रखेंगे, okay? So that they are Okay. also they are comfortable in Hindi also. So Okay. okay, Okay. yes. So in today's session we have already covered the basic part. Now we need just a software plus a programming, a little bit about programming or some Okay. kind of Okay, Neeraj, no problem. Then I'll just complete do it. hands-on. Okay. Yeah, Yes. ठीक है. Thank you. Thank you, Neeraj. So, okay, teachers and students. Yeah.
We'll do one thing. We'll just have a quick recap of Arduino. Already you have gone through this Arduino microcontroller, like the pins of microcontroller, like the different peripherals which we can connect through this microcontroller. ये सारे चीज already हो चुके हैं, but मैं एक quick revision recap कर रहा हूँ Arduino microcontroller के बारे में. Then we'll directly go ahead with the programming part. Correct? So yeah, let me just. I'm sorry. Yeah. So can anyone tell me like what is your understanding on this Arduino microcontroller or Arduino board? Any answer from any student? Arduino is you. Yes. Arduino is. Arduino is connected to the GPS tracker, or if we to Bluetooth car, we can Okay. use the board micro. You can use Arduino board for the Bluetoother and GPS. Thank you very much. Yeah, you have pointed it correctly. कि through Arduino we can connect different peripheral, different devices like Bluetooth device, GPS, GSM, etc., etc. ठीक है, thank you very much. Anyone else who want to answer? Okay. So basically, student, in just one line, we can define Arduino is nothing but it's a open or open source board, or it's a single board microcontroller, okay, through which we can develop our projects, right? Sir, It is I am a making yes. card sensor. करेक्ट, ठीक है. तो आप बहुत सारे चीज आप लगा सकते हो. आर्डिनो एक क्या है, एक बोर्ड है, एक माइक्रो कंट्रोलर है, ठीक है, सिंगल बोर्ड माइक्रो कंट्रोलर बोलो, जिसको हम यूज करते हैं प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए, विच वी आर यूजिंग टू डेवलप प्रोजेक्ट्स. नाउ एज यू सेड कि सर हम इसमें जीपीएस लगा सकते हैं, आरएफआईडी कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ लगा सकते हैं. तो यस, वी डू कैन connect many peripherals like GSM, GPS, Bluetooth, RFID, ठीक है, different sensors, anything which we want to connect, that all can be easily connected using this Arduino, right? So I can say कि Arduino एक सिंपल ओपन सोर्स बोर्ड है जिससे हम प्रोजेक्ट्स वगैरह डेवलप कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट पेरिफेरल्स और डिवाइसेस, ठीक है. तो दिस इज द सिंपल और आई थिंक दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन फॉर योर स्टैंडर्ड. नाउ इसके फीचर्स आप देख सकते हो. इट इज इनएक्सपेंसिव, ठीक है, सिंपल एंड क्लियर प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट, लाइक वी कैन डू द प्रोग्रामिंग इन अ वेरी इजीएस्ट मैनर. आसानी से हम प्रोग्रामिंग वगैरह कर सकते हैं, right? Then we have we open source and extensible software and hardware, means we can add and we can attach different softwares as well as the hardware part through this. So I'm not going to discuss more on this Arduino family because already this has been covered, I feel. ठीक है, तो मैं directly programming पे जा रहा हूँ. Before I jump into this programming, just a quick revision कर रहा हूँ कि Arduino, these are the different Arduino's family members. So basically the most common, हमारे पास जो सबसे common वाला Arduino जो हम लोग use करते हैं student, which is Arduino Uno, right? So we have Arduino Leonardo, Dio, Yon, right? Mega, Mini, Nano, these all are the lily pad, these all are the different families of, or you can say the different Arduino board, ठीक है. ये पूरे different same company, Arduino is the same company, one company, जिसके अलग अलग products है जो आपके स्क्रीन के सामने है. Arduino Uno है, lily pad है, Nano, Mini, right? तो ये पूरे अलग अलग Arduino के family members है और different boards है, made by the same Arduino company. Sir, Yes. We can attach the Arduino from the Arduino Nano cable. Yes, कर सकते हैं आप. Nano cable, no, I think nano cable के port is not is small one, so we cannot attach with that nano cable cable, ठीक है. Arduino Uno के लिए we have a separate cable for Arduino Uno. Okay, sir. राइट, उसके लिए एक सेपरेट ब्लू कलर का केबल, व्हाइट कलर का केबल आता है, बट फॉर नैनो आई थिंक द पोर्ट इज स्मॉल वन, तो उसका सेपरेट केबल आता है. नाउ let us talk about this basic pins of this Arduino. Before we start the programming, we should know the pins very thoroughly, right? तो हम लोग को pins को अच्छे से जानना होगा ताकि हम क्या कर सके,
कोडिंग में हमें पूरे पार्ट्स को एक क्लियर पिक्चर हमारे पास रहे. So basically the most important part here is I feel the digital input output pins. As you can see over my screen, student यहाँ पे देखो 0 to 13, right? तो 0 to 13 is nothing but the pins. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं IO pins, right? और digital IO, I stand for input, O stand for output. Now why it is input and output? Because the answer is very simple, क्योंकि हम ये पिंस को इनपुट के जैसा भी यूज कर सकते हैं, आउटपुट के जैसा भी यूज कर सकते हैं, और सिंपली वी कैन से कि वी कैन कनेक्ट इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइस फ्रॉम दिस पिन. ठीक है, ये पिन जो है 0 to 13, ठीक है, हम इससे इनपुट और आउटपुट जो भी डिवाइस है हम कनेक्ट कर सकते हैं. यस Sir, या sir, how to connect RFID sensor with Arduino? You know? यस, ठीक है, मैं बताता हूँ, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा तो दूसरे बच्चे लोग को भी वो समझ में नहीं आएगा. ठीक है, जस्ट वेट, गिव मी सम टाइम, उसके बाद हम वो बताएंगे. Tell us only software, sir. ठीक है, नो प्रॉब्लम, I'll discuss that at the end. ठीक है, you just wait. Okay, sir. Okay, then you can see यहाँ पे कुछ pins zero digital input output pins है. Similarly we have analog pins, right? A0 to A5. So these 6 pins are analog pins, input output, and these are digital pins. Similarly यहाँ पे USB plug, external power supply. So these are the power pins. आप power दे सकते हो either through USB cable or through external power supply like adapter वगैरह. Right now we have some reset pin, 3.3 volt pin, like this. We have different pins. Yeah, in this microcontroller, Arduino microcontroller, and here the microcontroller which is being used in this particular Arduino is ATME Mega 328 at Mega 328. So this is one of the microcontroller जो हम यहाँ पे use करते हैं. Now serial input, serial output, जो serial communication के लिए वो मैं आगे discuss करूँगा. ठीक है, उसके लिए ये सारे pins हैं. So I feel these are the basic introduction about this Arduino. अब मैं directly I'll share my screen to this Arduino IDE, like how we can use this Arduino IDE. I'm just skipping these slides now. Okay, अब मैं one second. Okay, one second, I'm sharing again. Share my screen. Yes. Yeah, look at here. So first thing is Arduino there is one IDE integrated development environment जिसपे हम क्या करते हैं, Arduino की coding वगैरह करते हैं. So now 2 ways we have, we can do the coding either ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों ऑप्शन है हमारे पास स्टूडेंट्स. ठीक है, हम ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं एक बार ऑनलाइन कैसा यूज करना वो दिखा रहा हूँ, देन विल गो विद द ऑफलाइन वर्जन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू check with arduino.cc. just search arduino.cc, which is the official website of this Arduino. ठीक है, so when you just go here you'll find this different option, this interface, और ये पेज आता है आपको. तो इसमें आपको different options है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, क्लाउड, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल. ठीक है, एक्सेट्रा. सो फर्स्ट थिंग you have to do is you have to go to software, click on software, यहाँ पे जाओ, and it will be asking and it will be showing this thing, code online. So if you want to use this online version or online IDE, you want to do the coding online, you can click on code online, right? यहाँ पे क्लिक करो.
right? So the immediate thing it will be asking to create your sign into your account. ठीक है, तो अगर आप account registration कर लिए, account create कर लिए, तो that's fine. यहाँ पे you have to give your username and password. If you have not done, then you have to click on create one, and then you have to create your account. Correct? तो ये है, this is the way you can use this online. So let me just sign in my account. I'll show you the interface कैसा दिखता है और क्या करना रहता है. Yes. Sir, which website? Arduino.cc. Okay. नाउ तो यहाँ पे आपके पूरे सॉफ्टवेयर के आईडी आ गए. अब यहाँ से आप कोडिंग वगैरह कर सकते हैं. सपोज आपको न्यू स्केच बनाना है, तो यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू स्केच, राइट? सो यहाँ से आपके न्यू स्केच ओपन होते हैं. नाउ यहाँ पे यू हैव टू राइट योर कोड. ठीक है, तो हाउ टू राइट द कोड, व्हाट आर द रूल्स, व्हाट आर द नॉर्म्स वी हैव टू फॉलो, ये मैं आगे नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. बट आई जस्ट ट्राई टू शो दिस पर्टिकुलर ऑनलाइन वर्जन. ठीक है, ये आप कर सकते हो ऑनलाइन वे. नाउ दोज हु हैव लैपटॉप और काइंड ऑफ फीलिंग कि नहीं मैं ऑनलाइन यूज नहीं करूंगा, ऑफलाइन यूज करूंगा. ठीक है, तो उसके लिए इट्स वेरी सिंपल. आप यहाँ से डाउनलोड कर लो. डाउनलोड के ऑप्शंस है, राइट? So we have Arduino Ide 1.8.19. ठीक है, कोई भी एक वर्जन आप यहाँ से डाउनलोड कर दो, and you can download options are here, right? So you can download and you use it as an offline mode, right? So I'll just show you how does it work. So yeah, let me open one. Chalo, right? So let me open the new one. Okay. See student, from here your coding starts, right? So this is what the main page or the interface or the dashboard you can say of Arduino IDE, right? Offline version आप download कर लो. Once you download, try to install it. Installation के बाद you'll find this icon, plus minus वाला Arduino के icon मिलते हैं आपको, उसको open करो. You'll directly redirected और you'll get this kind of dashboard. तो अब यहाँ पे क्या करना है बेसिकली हम लोग को, यहाँ पे दो तीन चीज समझना है. फर्स्ट थिंग इज व्हाट आर दिस फाइल्स, एडिट, स्केच, टूल्स एंड हेल्प. ये मेन्यू बार पे थोड़े से फोकस कर लेंगे, देन वी कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू do the coding in Arduino Uno. So basically when you click on file, just मैं quickly ये बता रहा हूँ कि फाइल पे आप क्लिक करोगे तो you'll get multiple options here. Like new option is there. New is nothing but अगर आपको एक नया कोई प्रोजेक्ट बनाना है, फ्रेश प्रोजेक्ट बनाना है, so for that you have an option of new. Then we have for open recent. Open and open recent is nothing. Suppose you have already developed or wrote a code and you want to just open it, right? तो आप यहाँ से open करके check कर सकते हो. Open recent, like आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो पहले कोडिंग कर चुके हैं उसको ओपन करना चाह रहे हैं रिसेंट फाइल, तो ऑप्शंस आर देयर. सिमिलरली वी हैव स्केच बुक, एग्जांपल्स, क्लोज, सेव एज, ये सारे अलग अलग ऑप्शंस है. एग्जांपल्स इज नथिंग बट हमारे आर्डिनो लाइब्रेरी में कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स रहते हैं, राइट? तो हम बिगनर्स लोग क्या कर सकते हैं, जनरली द बिगनर्स, द स्टूडेंट्स हु आर द बिगनर्स हु डोंट नो द एबीसीडी ऑफ आर्डिनो, तो वो लोग क्या करते हैं, दे यूज्ड टू टेक हेल्प फ्रॉम दिस एग्जांपल्स. ठीक है, तो दे यूज्ड टू सपोज they don't know anything about Arduino coding and all. So how to know the basics of programming? So go to exam. Sir, how to download? Yes. How to download the app? डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पे बताया ना मैं. Okay, one second. Sir, मुझे मिल रही ना. हाँ. Okay, Neeraj, could you please share the link for the download so that the student can download? See, options are there. Neeraj, are you there? Okay, no problem. See, यहाँ पे download का option है. When you click on this particular download option, you can easily get the downloading link, right? Go to arduino.cc. I'll share this link. No problem. One second. Give me a second.
See, you can check the download option from the link I have shared. Now see here, I was Yes, sir. talking I about found. this. Yeah, thank you. I was talking about this files. ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉल एग्जाम्पल. सपोज यू आर अ बिगनर, आपको कुछ भी नहीं आता और आप कोडिंग का बेसिक्स जानना चाह रहे हैं, तो यू क्लिक ऑन दिस एग्जाम्पल, गो टू दिस बेसिक्स एंड क्लिक ऑन दिस ब्लिंक, लेट्स से ब्लिंक एग्जाम्पल. ठीक है, सो यहाँ पे ये एक कोडिंग ऑलरेडी क्रिएटेड कोड्स रहते हैं हमारे पास. तो हम यहाँ से देखकर क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि बेसिक कोडिंग एलईडी को ऑन ऑफ कैसा करना आर्डिनो पे, उसके लिए कोडिंग कैसा लिखना है. तो दीज ऑप्शंस आर देयर, राइट, लाइक वॉइड सेटअप, पिन मोड, एलईडी बिल्ट इन आउटपुट. ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी. ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल बताया कि आपके एग्जांपल फाइल्स जो है वहां से आप ऑप्शंस दे जाके कोडिंग के बेसिक्स देख सकते हो. सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारे सेंसर्स से रिलेटेड, मोटर से रिलेटेड, आपके अलग जीएसएम से रिलेटेड ऑप्शंस है. आई मीन द कोडिंग्स ऑलरेडी है, आप वहां से चेक करके वो चेक कर सकते हो. ठीक है, बेसिक कोडिंग से हेल्प ले सकते हो. नेक्स्ट, लेट मी क्लोज दिस. अब मैं डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. सिमिलरली वी हैव एडिट ऑप्शन. ठीक है, स्केच ऑप्शन. एडिट ऑप्शन में क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे ऑप्शन देखो, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट, गो. Edit means whatever the editing work you want to do in your coding, that all are possible through this option. Sketch option बोले तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं अपलोड करने के लिए, राइट. कोड को कंपाइल करना है, यू हैव डन योर कोडिंग, नाउ यू वांट टू चेक वेदर द कोड इज करेक्ट और नॉट, तो यहाँ पे पूरे ऑप्शंस मिल जाते हैं. सपोज इंक्लूड लाइब्रेरी. इंक्लूड लाइब्रेरी इज व्हाट, इट इज जस्ट लाइक कि आप आपके कुछ कोड लाइब्रेरीज इंक्लूड नहीं रहते हैं. ठीक है, और इनबिल्ट लाइब्रेरीज पे कुछ फाइल्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स बाहर से उसको डाउनलोड करके यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, सो दैट आवर कोड वर्क्स प्रॉपरली. तो ये सारे ऑप्शंस हमारे पास है. सिमिलरली वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड टूल्स. यहाँ पे देर इज वन इम्पॉर्टेंट, जो जनरली जो विच आर द फंक्शंस वी आर यूजिंग, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट ओनली. ठीक है, जो हम यूज करते हैं जनरली अपने कोडिंग पे, जो हमें यूज करना रहता है, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एक सीरियल मॉनिटर बोल के आता है. सीरियल मॉनिटर इज नथिंग बट कि आपके जो भी कोडिंग आप किए तो वो कैसा काम कर रहा. ठीक है, आपने सेंसर्स वगैरह लगाए, वो काम कैसा कर रहा, कमांड्स कैसे हो रहे, इनपुट आउटपुट, वो पूरे आपके मॉनिटर पे डिस्प्ले होता, राइट. सिमिलरली वी हैव एक यहाँ पे एक ऑप्शन कॉल्ड बोर्ड एंड, तो यहाँ से आप बोर्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से बोर्ड को सेलेक्ट करें. सपोज आप आर्डिनो यूनो यूज कर रहे हैं और यून यूज कर रहे, नैनो, मेगा, वट एवर द बोर्ड यू आर यूजिंग, सो फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट द बोर्ड फ्रॉम हियर, राइट. तो इस तरीके से दिस मेन्यू बार विल हेल्प यू टू गो थ्रू द डिटेल्स ऑफ आर्डिनो कोडिंग. नाउ लेट मी स्टार्ट विद दिस आर्डिनो कोडिंग. अब मैं कोडिंग से डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट. सो कोडिंग को स्टार्ट करने से फर्स्ट थिंग इज, बाय डिफॉल्ट यू कैन सी बिफोर आई स्टार्ट दिस कोडिंग, स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो ये दो चीज बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं. आप जैसा ही क्लिक करोगे न्यू फाइल पे, ठीक है, तो दिस टू थिंग्स, टू फंक्शंस comes by default, right. So ये क्या है बेसिकली, तो just try to understand void setup. This is one function, void setup. Now if you just read this line, it is written here, put your setup code here, right, to run once. इट मीन्स आप जो इस सेटअप फंक्शन के अंदर जो भी कोडिंग करोगे, जो भी कोड लिखोगे, तो दैट विल रन ओनली फॉर सिंगल टाइम. ठीक है, वो एक बार रन होने के लिए ही है, वो एक बार ही रन होगा. ठीक है, तो ये सेटअप फंक्शन, तो सेटअप फंक्शन इज नथिंग बट, और मैं इसको एक अच्छे सिंपल लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकता हूँ कि जो भी आप आर्डिनो से कुछ भी कनेक्ट कर रहे हैं ना, लेट से आप एलईडी को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या बजर लगा रहे हो या सेंसर लगा रहे हो, जो भी आप पेरिफेरल्स कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, राइट. वो उसको यहाँ पे बताना पड़ता है कि वो जो हमारा एलईडी हम यूज कर रहे हैं या फिर बजर यूज कर रहे हैं, वो इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है. दिस थिंग वी हैव टू टेल इनसाइड दिस सेटअप फंक्शन. ठीक है, तो एक डिक्लेरेशन रहता है. यस Tariq sir, sorry to interrupt, sir. Tariq sir, actually there's a request from Andhra Pradesh also. They need a little bit in English, okay, because they are not able to get in Hindi. So if it's possible, we'll try. Sure, Niran, no problem. Thank you very much. Yeah, I'm so sorry, students and teachers. Like I'm using Hindi a bit.
So no problem. Yes, and Tariq, sir, one more request from a school side. Actually, they want a break also because the session started from 9 o'clock. So school का एक request आया था कि 9 o'clock से session start है, तो हमें एक छोटा सा break भी चाहिए. So students हमारे lunch या ऐसा कुछ अगर करना चाहते हैं, they want a lunch or some kind. So we'll take at 10:25. We'll take a break of 10 to 15 minutes just for their lunch or refreshment. So students, अगर आप एक lunch break या refreshment करना चाहते हैं, तो आप 10:25 पे या 10:30 पे आप एक lunch break कर सकते हैं. Just hardly 10 to 15 minutes because I know this session is going to be interesting. ये बहुत अच्छी चीज आप सीखने वाले हो. So एक थोड़ा सा एक break हो जाता है ताकि आप थोड़ा सा energy ले लें. You will get an energy and then we'll come up with a new ना हम फिर से इसको start करते हैं. So what I'll do, हम एक 10:25 पे या 10:30 पे एक break लेते हैं just for 10 to 15 minutes. And I hope teachers also you will take a break or some kind of, so that हम अपना आगे का session start करेंगे. और आगे जो session है बहुत ही ज़्यादा interesting होने वाला है because अभी machine learning भी है और कुछ programmings भी अभी यहाँ सीखने वाले हैं. So I hope you don't mind. We'll take Tariq sir, we'll take a break at 10:30. And teachers, I just want to share, I think some of the teachers have said कि उनको आज का जो live streaming, some teachers said that the YouTube's link is not working. So what I'll do, we will again post the links in the chat box. Okay, we'll do one thing, Neeraj, already like because 10:24 it's there. Let's take the break now at 10:25 because yeah, after the break we want to just go through this complete thing, because if I start now again it will be a mashup kind of thing. Okay, so better after the break student will come with fresh mind and all, then we can start the basics from this. ठीक है ना? आप हम है ना, there's a WhatsApp group, anything, I will share the link again of this join with that. Thank you, sir. Yes, Tariq. Yes, students, to have a break. Then we'll start this session at 10:40. Okay, sharp 10:40. I'm sharing the link again for the news session because some of the teachers are unable to join this session. So I hope you don't mind. Yeah, thank you so much. Okay, sir. Okay, sir. Sir, we exit the meeting. ಇಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಅದ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. Teachers, I have shared the new joining link in the WhatsApp in the group. So I hope I request all the RPs to please share the new joining link. And those who are not able to join from the previous link, I have shared a new link. Requesting you all please have a look over there. So जो student teachers and students आप जो पुराने लिंक से नहीं ज्वाइन कर पा रहे थे because of any technical issue, मैंने एक और नया लिंक शेयर कर दिया है हमारे WhatsApp ग्रुप में. आप उस पे ज्वाइन कर लीजिए और हम 10:40 पे स्टार्ट करने वाले हैं ये सेशन. ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ